Hello, sir. Welcome to Beyond the Brief. Hi, Rashmi. Thank you for having me. Yeah, I'm so glad to see you here, and thank you so much for joining in. So, before beginning, I would like you to please introduce yourself for the audience. So, my name is Priyam Goyal, and I'm a law professional as well as I'm a company secretary by profession. I am currently working in Vash Associates Advocates in the General Corporate and Employment Law team, and I have an experience of 2.5 years in this field, and I think this would be helpful for the audience to understand the aspects of our today's topic. Absolutely. Sir, so you secured AIR 12 in your CS professional exams. Can you please walk us through your preparation journey? I mean, how did you balance studies, law, CS, everything? So, my journey was a bit constant. Like at that time, COVID stuck. Okay, Right. so I joined my law school in 2017. I completed first year of my law school. Then in 2018, I came across this course, company secretary, and I joined this course. I cleared my exam in first attempt, the CS foundation. At that time, there was a CS foundation then. So I have completed that. After that, COVID stuff in 2020, right? So for executive, I have time. Now, Right. So, the COVID acted law as school a classes are blessing online. in disguise for you. Yeah. Yeah. So in law school, we have to go to school. I mean, we have to go to college and we have to secure at least, I think maybe we have to maintain 75% of attendance. Right. And that would be a task if I would have to complete my CS. Right. Because for that, I have to go to College. coaching classes, like tuition. Okay. So in that case, COVID came as a helpful tool and the classes were online. So I can just do both the things, CS as well as law simultaneously. Right. And yeah, so but since I have to prepare for both, so in executive, I did not take risk as executive is the most toughest thing for me, according to me. I'm sorry. And I gave first group in December 2019 and second group in December 2020, something like that. Yeah. So this is how I cleared executive. And then came in between, yeah, I have my sister's marriage, like real sister's marriage in December 2020 itself. So her marriage was on 9 December, her anniversary is soon to be there. So, and after that, I have an exam from 21st of December. Yes. And I slept for like straight 3 days, 11, 12, 13 after her marriage Hmm. was also fun. Like that is something I remember always that even though there were exams, uh, I would able to pull this out. And after that, in 2021, I have prepared for professional exams, and in those at that time there were three groups. Now it is two groups, but at that time there were three groups, and I gave all three in one shot. And yeah, that journey was really that journey changed my mindset a lot because. In that journey you don't get time to like revise much. Right. So all the nine papers happens consecutively without any break, except for the 25th December. The Santa Claus comes to you as a gift. As a So rescue. other than that, you have to prepare. Yeah. So even you have to wake up at night for preparation. You have to do that, right? So I used to prepare like that for a few papers, like two or three papers. I woke up whole night just to prepare it. I was not so confident. And then for other papers, I was confident, so I slept. So you have to balance it. And then I just sailed through the exam and secure AI at home. Right. In our last episode where we had Suyash sir for the similar topic CS preparation, he also mentioned this कि वो जो professional exam का exam वाला point होता है, that is very hectic because the exams are continuous, you do not have gaps, so it's very difficult to Right. revise and appear for the exam and balance your बट वो sleep. एग्जाम जो होता है ना, हाँ वो एग्जाम, सॉरी टू कट यू, बट वो जो एग्जाम होता है ना, वो आपको पता नहीं बहुत कुछ सिखा जाता है रश्मि, टू बी ऑनेस्ट। आपको डिसिप्लिन आ जाता है कि आपको डाइट में इतना ही लेना है, अदरवाइज यू विल स्लीप। Right. आपको पढ़ाई इस पोर्शन को इतने टाइम में फिनिश करना पड़ेगा, यू हैव टू स्किप एवरीथिंग, Hmm. लाइक योर स्लीप, लाइक फूड, लाइक एंटरटेनमेंट। फोन तो भूल ही जाओ।
मतलब आई थिंक जो प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने भी फोन नहीं चलाया होगा उस टाइम, इंस्टाग्राम एंड ऑल। मेरे उसमें Absolutely. तो इंस्टॉल्ड ही था। So Right. this is how you learn, and if you give up everything, no, magic happens, and that what True. happens with me. So you have to understand that discipline and hard work are the key things that has been taught by any professional exam, be it CA, CS, CMA, CA, CFA, whatever it is. Right. So this is the So, basic thing. right. So you started your CS preparation in the second year. Did you have a plan of, pursuing CS since the beginning? Because according to me, when we enter law school, we have this image of wearing black robe and arguing in court. So, did you have this idea before entering the law school, or how was that? Also, this is an interesting thing. Actually, I don't even know about the course. As I told you that I came across this course, came to know about this course in 2018. ठीक Hmm. है, तो ये भी मुझे कैसे पता चला? Cousin sister was just initiating his career, like she wants to pursue this course, and she told me कि ऐसा एक कोर्स होता है। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला सिलेबस दिखाना। तो शी हैंडेड ओवर द सिलेबस, आई थॉट कि ये तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन का कोर्स बहुत इजी होता है लॉ के हिसाब से। इफ यू सी ना, इवन यू विल सी यार, ये तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। Right. तो मैंने सब पढ़ रखा है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, अरे ये तो मुझे Executive or professional में तो they judge you very well. हॉरिबल। एग्जीक्यूटिव इज द मोस्ट टफ, Right. मतलब टफेस्ट आई वुड से, क्योंकि वो आप क्या होता है ना, फाउंडेशन में एकदम एकदम लीनियंट होते हो, एंड एग्जीक्यूटिव में ऐसा पुश आता है कि आप पूरा हिल जाते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाता है। So, एग्जीक्यूटिव तो यार इसीलिए मैंने सिंगल ग्रुप दिए थे, वन एट अ starting टाइम। ekdam randomly, somebody told you. How is that? You are entering something so randomly and then ending up getting an AI at 12. Also because you were pursuing law. So do you think there's a particular synergy between law and CS? Because a lot of students who are pursuing law are looking into the options of CS these days. राइट, सो डेफिनेटली, डेफिनेटली देयर आर सिनर्जीज, एज आई हैव स्टेटेड कि फाउंडेशन का जो कोर्स है, राइट, सो फाउंडेशन का जो लीगल पार्ट है कोर्स का, सो देयर आर, आई थिंक देयर वर 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लीगल, आई थिंक एप्टीट्यूड, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट 4 सब्जेक्ट्स, बट जो लीगल एस्पेक्ट था उसका, उसके अंदर आपके ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स जो थे वो सेम थे, लाइक टॉपिक्स वर सेम, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, एवरीथिंग वाज सेम, ओके। सो दैट हेल्प्ड। अदर देन दैट, आपका जब आप एग्जीक्यूटिव में जाते हो, सो यू हैव अ ब्रॉड, like 17 to 18 topics in the legal part of the exam, okay? So that was a broader one, and that gives you an sense that if you read all these, you have the idea of broadly all the laws in India that are applicable, including the employment laws, CPC, CRPC, IPC, evidence. So every law is there, okay, in CS exams. Hmm. Although it not the complete law was there, the relevant portions were there for with respect to company and all. But yeah, there was this aspect. So that gives you motivation. Okay, if I go in this exam, तो मैं आगे जाके मेरे लिए advantages है। Hmm. सो True. ये सिनर्जी हमेशा रहेगी सीएस और लॉ के बीच में, लीगल एस्पेक्ट के, बिकॉज कंपनीज एक्ट आपको लीगल। सो आई डिड बीबीएलएलबी, ओके। Hmm. सो मुझे एक सब्जेक्ट ही था कंपनीज एक्ट, सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज एट बाय दैट टाइम द सब्जेक्ट केम इन माय करिकुलम फॉर दिस बीबीएलएलबी। मैं सीएस में ऑलरेडी पढ़ चुका था, मैं क्लियर भी हो गया था एग्जीक्यूटिव, सो दैट वाज हेल्पफुल। सो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, तो मेरे को फाउंडेशन ईजी हो गया था। मैंने यहाँ पे कंपनीज एक्ट पढ़ लिया था, तो मुझे लीगल एग्जाम्स इजी हो गई। सो दिस इज हाउ इट प्लेज एंड इट बैलेंसेस लाइफ फॉर यू, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज वुड बी नो डुप्लीकेशन। यू हैव टू रीड इट वंस, यू हैव टू थॉरली गो थ्रू इट, एंड इट्स डन। अगर एक जगह पढ़ लिया तो मैं दूसरी जगह इतना वो नहीं फोकस करूंगा, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस एग्जाम में किस पैटर्न पे आता है, Right. या इधर मैंने ऐसे पढ़ा था, इस एग्जाम में किस पैटर्न पे आता है। So that much anyone can Yeah, like that you have to afford do to for. spend time on. Right. Sir, but this is about the examination. How about the synergy in the professional world? Because I see a lot of students who have cleared CS, like who are CS qualified, now face a challenge of choosing one path. I mean, they are under this pressure of choosing one path. So how does that work?
Because also, So I would say, I'm so sorry, but as a student, yeah. I see a lot of my friends doing CS just because they get an advantage in internships. When you write it in your CV that you're a CS aspirant, they do get preference in internships. But how about the professional world when you actually start the job? Okay, so definitely in professional world, there is no doubt you have an extra edge when you are a professional. So Right. be it a CA, CS, or a CM. So why I'm telling that, so since our topic is CS, just touch upon CA. So if you are a CA, you are very good at taxation laws, Hmm. right? And again, if you are a lawyer with a CA degree, no one can beat you in taxation, right? Right, right. So where I work at Vash Law, there are CS with law degrees, CAs with law degrees. Okay, so Okay. I can see this deadly combination. This is a deadly combination. So similarly, if we see the CS thing in corporate, in professional world, how it plays out is there is always an advantage of your learnings as a corporate compliance officer. Okay, so CS is a compliance officer. Right, So he knows the law with respect to company specifically. However, what law we learn in the law schools is very general. So right, general in the sense contract, constitution, CRPC, CPC, we learn everything. right. But in company secretaries, we focus more on corporate Deep. compliances, corporate related aspects. Right. So always there is an edge, and companies or firms, whatever way you want to go, prefers someone who has both the degrees for very obvious reason that he will get one person hired in the same salary, and he can perform two roles. Because if you have seen, there is not only a company secretary or secretarial officer, he must be a legal officer as well as secretarial officer. So Hmm. the designations are both like head of legal, head of secretarial and legal officer. So something like that. So if any company or a firm is getting advantages like that, so there is always a add-on edge in the market. Having said that, you have to be also be aware of one fact that आपके पास दो डिग्री है, ठीक है, बट मार्केट अभी भी डायनामिक है, Hmm. ठीक है. सो दो डिग्री होने से कुछ नहीं होगा, आपको ज्ञान पूरा है बट आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज ऑफ नो यूज. एंड आई हैव सीन दीज थिंग्स. ओके, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लोगों को आता बहुत कुछ है Hmm. बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो डिलीवर नहीं कर पाते, और जब आउटकम नहीं दिखता है ना, सो नो वन विल बी इंटरेस्टेड कि तुम्हारी दो डिग्री या तीन डिग्री. Right. सो वन हैज टू बी या माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट एज वेल. क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर मैंने तो दोनों डिग्री कर ली है, सर अब मैं जुडिशरी भी कर लूँ क्या. मतलब आई हैव दीज क्वेरीज विद अदर्स, एंड आई एम वेरी हेल्प थैंकफुल टू यू कि तुम इस चीज पे पॉडकास्ट बना रही हो, क्योंकि एक ही बार में सब काफी लोगों को रीच आउट होगा ये, Yeah. एंड मेनी विल गेट देयर आंसर्स. सो हमें ये चीजें देखनी होगी कि हमारे लिए क्या सही है. मैं जुडिशरी भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं एनएलयू से एलएलएम भी कर लूँ, इट डजेंट हेल्प. यू Right. हैव टू बी अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशन. यार मेरे पास अभी M&A चल रहे हैं, स्टार्टअप्स, यू सी entrepreneurs आर कमिंग along. So no, anywhere they need the corporate expertise to get along with the investors, because investors ऐसे पैसा नहीं दे देंगे आपको, they will do the documentation, right? CS का रोल यहाँ पे और क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में उसको सबसे ज्यादा माना जाता है कि ही नोज द कंप्लायंसेस वेरी Hmm. वेल. सो फाइलिंग रिलेटेड, द पोस्ट क्लोजिंग थिंग्स. तो पोस्ट क्लोजिंग आई मीन कि तुमने सब कर लिया, साइन हो गया डॉक्यूमेंट, टर्म्स अग्री हो गई इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच में, साइन हो गया डॉक्यूमेंट. नाउ पोस्ट क्लोजिंग में आपको कुछ फाइलिंग्स होती करना होती है, राइट? सो मैंने, सो जस्ट टू वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन, Hmm. लाइक सपोज कोई शेयर्स अलॉट किए मैंने इन्वेस्टर्स को, राइट? सो देयर इज अ फाइलिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर. अब वो फॉरेन इन्वेस्टर है तो फेमा भी आ जाएगा. ओके, सो ये सब सीएस को पता होता है. तो सीएस Hmm. के लिए मार्केट अभी बूम कौन सा है अभी के लिए? सो Startup. इट्स अ स्टार्टअप थिंग, कल्चर है. सो या, I'm not saying only startup. I'm just saying that M&A transactions, Hmm. share purchase transactions, businesses are getting transferred. So these all things are there. IBC is very prevalent, and we have been taught IBC, insolvency and bankruptcy code, Yes, in yes. the course. So we have been taught that. So it is also interesting field. So for CS, ये सब extra edge है. I don't remember law schools IBC वगैरह सिखाते हैं. But nowadays, if curriculum has changed, then it is fine. You would be the better judge of this.
तुम्हारा Even if the एक्सपीरियंस क्या है इसके लिए आईपीसी हो? even if the curriculum has changed, we only study 2 nights for the university exam. I mean, we do not have so much time to put in a particular subject while we are in law school. जैसे कि just now you told, it is राइट very generic. We have 6 subjects in a semester and इतना डिटेल में हम कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते. राइट सो yeah, diplomas are there. So Hmm. see, correct. So you have given me another point. So diplomas are there. Why people are doing this? Why people still doing diplomas? Hmm. यार कितने लोग हैं जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है बट फिर भी वो डिप्लोमा करते हैं जस्ट Right. टू बी अवेयर ऑफ द मार्केट. Right. अदरवाइज वो पीछे छूट जाएंगे. सो मेरे पास सिर्फ 2 डिग्री उससे कोई मतलब नहीं है. आई मीन दैट ऑलवेज मेक सेंस बट आई हैव टू बी अवेयर अराउंड अबाउट द सिचुएशन. सो just one example to finish this answer. Since we are talking about awareness, when I joined this firm, we had certain due diligences going on. So you are Hmm. aware what due diligence is, right? Right. Okay. So in that case, I have been asked by the partner to join a employment law team. Okay. Till that date, I was not at all interested in employment laws, labor laws, if you know, Hmm. Factories Act, ESI, EPF. So I was not interested. And I was suddenly asked that, can you just do the diligence in this sector? So luckily, I have a great partner who was, whom I was assisting, and he taught me everything. And now I do employment work as well. So, see, this is how you have to get along with the things. You can't just say, no, sir, I won't do it because I Right. don't have expertise, right? So, even if you don't have, you have to just push yourself to have an extra edge. Right. Sir, since you mentioned about getting one job done in like getting jobs done in a single salary, how is the compensation if you are a CS professional and you have a law degree? So, see, that differs. Like, there are various parameters. First, location. Second, your job role. Third, your responsibilities. Fourth, I would say your experience. Hmm. Okay, so all these factors differentiate the things with respect to perks and salaries. Obviously, the law firm thing, sorry, the firm thing and the corporate thing, like Hmm. company aspect. This also differs because sometimes in company, like the top paying CS was in HUL. Uh, and accordingly, if you see the law firms, I don't think anyone has touched that mark yet. Okay, so there are differences, and obviously, if someone is taking work from you, you are putting an effort, so you will be paid accordingly. I mean, there is no specific figure that I can tell you Right. with this aspect, but yeah, there is always an advantage because you. So, we can clearly say कि if you have a CS and a law degree, you will, climb the corporate ladder faster than the others. No, 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 no. Again. So with I that, mean, I have this told is you now not you a have to be straight. dynamic. You have to, Yeah. yeah, correct. So I can't just say that you have because I see रश्मि ऐसा नहीं होता है. So हम जो देखते थे ना बचपन में कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे नहीं होता वैसा. When you come to the professional life ना तो आपको ये समझना होगा कि हर किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ ज्यादा ही है. Hmm. मतलब आपने खुद के लिए इतना सोचा ही नहीं होगा उससे ज्यादा ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. ओके सो मेरे पास 2 डिग्रीज है. ऑलवेज एन एच इन टर्म्स ऑफ सैलरी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. Right. बट बी अवेयर कि यहाँ पे एनएलयूज भी हैं. यहाँ पे दूसरी और टॉप लॉ स्कूल्स के बच्चे भी हैं जो दे आर फाइटिंग फॉर द जॉब. Hmm. राइट. सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन जॉब प्रोफाइल as well as your caliber. How will you portray yourself? Because CS में एक चीज है जो I always feel कि we always so we do a comparative in law school. हम जनरल लॉ सीखते हैं Right. बट हमारे पास एक्टिविटीज होती है राइट. लाइक मूड Hmm. कोर्ट होता है, एमयूएंस होते हैं, पार्लियामेंट्री Research. डिबेट्स होती हैं, एक्सटेम्परे होता है, डिबेट्स होती है. Cut to CS, we have specialized things, but we don't have the other perks like no mood court. होता है but वो it's a once in a while वाला scenario होता है. Not all students get the chance to participate. Right. कुछ बहुत restricted amount के लोग ही कर पाते हैं. To the best of my knowledge, अभी कुछ चेंज हुआ उस पैटर्न में तो मुझे नहीं पता, बट हाँ हमारे टाइम पे ऐसे हर कोई नहीं कर पाता था. Hmm. बहुत बहुत फाइट होती थी उसके लिए भी.
देन ये MUN डिबेट्स दे ऑर्गेनाइज बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, जैसा हम लॉ स्कूल्स में देखते हैं या लॉ स्टूडेंट्स को हमने फेस किया है. सो अब अगर समवन हु इज मोर स्ट्रीट स्मार्ट, ओके, एज वी बिकम इन लॉ स्कूल एंड हु इज नॉट इन CS, तो जस्ट यू थिंक कि बीइंग एन HR whom you will pick. who can deliver. सिखा मैं दूंगी, तुम हमेशा यही सोचोगे कि लॉ तो मैं सिखा दूंगी, लॉ हाँ. तो वो पढ़ के भी सीख जाएगा. ठीक है, और यूं भी मुझे भी मेरे पार्टनर्स को भी सब कुछ याद नहीं होता है, वो भी एक टाइम बाद रेफर करते हैं लॉ. करेक्ट, बट उनको पता है कि कैसे करना है, तो मेरे को वो बंदा चाहिए जो उसको पता हो कैसे करना है, कौन सी चीज कब देखनी है, कौन सी चीज कब नहीं देखनी. क्लाइंट को कैसे हैंडल करना, तो स्ट्रीट स्मार्ट वाला कर पाएगा, CS वाला नहीं कर पाएगा. सो दिस इज द थिंग, नो. सो हर एक कॉइन के वो होता है ना, देयर आर टू साइड्स. सो इसमें भी है. इसलिए ये एक एडेड एडवांटेज क्यों है कि उनको पता है कि स्पेशलाइजेशन में मिल रहा है, स्ट्रीट स्मार्टनेस में मिल रही है. करेक्ट. Right. इसलिए प्रेफरेंस भी बढ़ जाती है. So, like, degree does not matter. If you can deliver like Mike, you don't need to have a Harvard Law School degree. What we have to do is we have to satisfy the client, right? So for us, client is God because he is paying. तो हमें प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब स्टेपिंग करते हैं ना, तो हमको वो सब बचपना छोड़ना पड़ता है. हमें ये सोचना होता है कि यार आज मैं क्लाइंट का काम नहीं कर पाया हूँ, क्लाइंट को मुझसे चाहिए. अब मुझे क्लाइंट को कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट मुझे फोन लगा रहा है, मैसेज कर रहा है, मेल डाल रहा हूँ. मेल इज द वर्स्ट पार्ट. मैं फोन और मैसेज पे क्लियर कर देता हूँ तो ठीक है, मेल पे आया तो सबको दिखेगा एंड इट विल बी इन रिकॉर्ड. सो मुझे ये सब चीजें समझनी होंगी, और मैं अगर सिर्फ काम काम में लगा दूंगा और उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, अगेन स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है, तो मेरा पढ़ाई लिखाई ठीक है मैंने कर ली, बट मैं क्लाइंट हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो दिख क्या रहा है कि जो स्ट्रीट स्मार्ट है उसका तो मेल आ नहीं रहा है, लेकिन मेरे को जो जिसको सब आता है उसका ईमेल आ रहा है, तो वो सबको दिख रहा है. सो अगेन आई एम स्टक, राइट? सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट इन प्रोफेशनल लाइफ. आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज यार हमें सब कुछ आना चाहिए. सब कुछ इन द सेंस सिर्फ नॉलेज के रिलेटेड नहीं, सब कुछ आना चाहिए. हमें लोगों से डील करना आना चाहिए. जब आपको पीपल मैनेजमेंट आ जाता है, आई स्वेयर कि आपको बाकी चीजें बहुत इजी लगने लगती है. So, this brings me So to this is the thing. something else. Like a lot of students who are pursuing CS, या फिर बहुत सारे लोग जो जुडिशरी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, they tend to cut themselves. They will not attend any functions, any events, moot courts, anything. Right. You'll see them Right. in mid semesters, then you'll see them in university exams. So I think even if you clear professional exams, and if you're leaving all of those things, some do not even intern. So then you are not like, you might think you are ahead of all of your batchmates, but you might not actually be ahead of them. So what do you think on Yeah. that? I mean, yeah, we have already discussed on this, and somewhere they are ahead of us, somewhere we are ahead of them. I mean, we in the sense of people who are doing all those activities, because in law schools there are hardly 20-30% people who approach to the competitions outside their colleges. Like they go for moot courts, they go for youth parliament, they go for debate, parliamentary debate. So yeah, obviously, even in the same law college, forget about CS. If we keep CS aside and I'm only doing law, in that, if I'm not going for moot courts, not going for any other competition, not taking part in any extracurricular, co-curricular activities, even if it is singing, dancing, or drama in the college, I won't be having that confidence of speaking or appearing before anyone, right? So it is not with respect to only CS or law or any other profession like judiciary that the people cut off. It's just that if you don't appear, you won't get that experience. And to get that experience, you have to make some effort. So Right. ultimately, it's a general thing rather than a specific professional thing or something like that. Right. So is there anything which you want to specifically, give an advice to students who are looking up for CS, like for aspirants, and uh, who also to students who have, qualified CS, but now they're stuck how to start the professional journey? First start with the those. So अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर. Right. सो सिंपल रूल है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती. फर्स्ट इज हार्ड वर्क, सेकेंड इज डिसिप्लिन, थर्ड इज बिलीव. बिलीव किस चीज का? कि मैं कर सकता हूँ.
एंड फोर्थ इज पैनिक मत करो। और ये एग्जाम तुम्हें सिखा देगी कैसे नहीं करना है, और यह बता देगी कि अगले अटेम्प्ट में कैसे नहीं करना है। हम्म क्योंकि पैनिक किया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट ही होता है। हम्म एंड इट हैपेंड विथ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एट द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, कि जिसने पैनिक किया है ना, आपको आता सब कुछ है, मतलब मुझसे ज्यादा आता होगा उन्हें, हम्म बट दे पैनिक, तो क्या हुआ कि गड़बड़ हो गई पेपर लिखते हुए। तो वो चीजें जो होती है ना, वो हमें अवॉइड करनी होगी। जस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, दैट इज द बॉटम लाइन। And leave everything behind when you are preparing. Be it your friends, just cut yourself out of everything fun and all. I'm not saying that completely. Obviously, you have to have some breaks, you have to have some fun, but yeah, in a planned manner. right हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज मेरे दोस्त ने बोला है चलो हम समोसा खाकर आएंगे। नहीं भाई, रुक जा, मेरे को अभी ये चीज कंप्लीट करनी है, इसके बाद चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं हम्म यूं भी 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेने वाला हूँ, या 1 आवर का, जो भी वॉट एवर एनी वन शेड्यूल्स, तो मैं लेने वाला हूँ ना वो ब्रेक, उसमें चलें। हम्म सो दैट इज द सिंपल रूल। यू हैव टू हैव सम फन, क्योंकि नहीं तो आप ऐसे हो जाते हो कि burn out एक लूप में फंस जाते हो कि, right या बर्न आउट हो जाते हो, एक लूप में आ जाते हो कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और फिर एग्जॉस्ट हो जाते हो हम्म बाय दैट थिंकिंग ओनली। सो आपको वो प्लान करके रखना होगा कि हाँ, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, देयर आई एम अर्ली बर्ड, ओके। सो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, 7 बजे तक मैं पढ़ना शुरू कर देता था इधर उधर का करके, और फिर उसके बाद आई यूज टू सिट टिल 12। देन माई मदर नोज कि ये अब ऊपर आएगा, नहाएगा, खाना खाएगा। सो या माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव इन दिस, सो दे नोज कि मैं कब खाना खाऊंगा, कब नाश्ता करना होगा, कब रात का खाना खाऊंगा। सो दे प्लान देयर डे अकॉर्डिंग। तो वो भी एक एडवांटेज मुझे मिला। मेरे दोस्त भी बहुत सपोर्टिव थे, वो मेरे को फोन लगा के आते थे, मुझसे पूछते थे कि इतनी देर के लिए अवेलेबल है, ठीक है हम आएंगे उतने टाइम के लिए, लेकिन फिर मैं पढ़ाई नहीं करता था। हम्म क्योंकि क्या होता है ना, वो आपको ब्रेक चाहिए होता है। सो फॉर स्टूडेंट्स, आप सब चीजें छोड़ो, मतलब द वे कि आप पढ़ाई पे फोकस कर सको, एंड लेट द मैजिक हैपन, और पक्का मैजिक होता है। ठीक है, दिस इज द लाइन दैट आई एम borrowing from one of my teachers, and he was really amazing. He is really amazing, and like ये सच है, मैजिक होता है। ठीक है, सो जस्ट लेट इट हैपन, do your work whatever you can do at your level, and let it be, rest will happen itself. सेकेंड, प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आपने सीएस क्लियर कर लिया है और आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। आई नो, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था फर्स्ट ट्रेनीशिप लेने के लिए। आई अप्लाइड टू ऑल द टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज, आई हार्डली गॉट अ कॉल फ्रॉम 2 or 3 ऑफ देम, इवन इवन व्हेन आई हैव अ रैंक। सो बहुत स्ट्रगल होता है, बट आपको क्या करना होगा, आपको अप्लाई करते रहना होगा, समवेयर समडे यू विल गेट द कॉल। और उसके बाद आपके जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, लाइक हमारा ईडीपी होता है एंड सीएलडीपी होता है, सिंस दे आर क्वालिफाइड तो सीएलडीपी भी होता है। हम उन दोस्तों से रेफरेंस ले सकते हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु आर आवर फ्यूचर कनेक्शंस, right राइट। एंड वही हमें काम ला के देंगे, या वही हमें जॉब में भी हेल्प कर सकते हैं। right सो वी कैन अप्रोच थ्रू दैट, और वी कैन अप्रोच थ्रू द फैकल्टीज दैट वी हैव एट द टाइम ऑफ दोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो right इस तरीके से आईसीएसआई के भी काफी अभी तो वो चल रहे हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स, मेगा प्लेसमेंट ड्राइव्स। आई थिंक इन मुंबई, आई एम इन मुंबई currently, so in Mumbai, I think in Belapur, the placement drive was going on like last week or last to last week. So this is how they can approach. And yeah, it's like you have to make some efforts, and you have to show something that I have done this, I have done that, so that you will be picked earlier than others. Like a lot of my seniors who have qualified CS are now into this confusion ki whether to opt for CS or to continue with law, particularly because जो 21 minute months का ट्रेनिंग पीरियड है वो बहुत लंबा लग रहा है उनको. So how was your training period and how can one sort that question in their own fields? Okay, so first, my training period, it was amazing. Actually, 21 months, you got to go through a roller coaster ride, because you don't know anything, and you have to learn everything, because theoretical and practical aspects are very different. Right. There is a way to tackle things practically, and there are theories which we learn. So it was an amazing experience. 21 months were very good. मजा बहुत आता है, क्योंकि आपको नए लोगों से बात करने को मिलता है, आपको समझ आता है कि हाउ पीपल react to something or how people approach towards something.
Right. and there are different people. So this is the one thing. अब बात आती है कि 21 महीना की ट्रेनिंग है, 5 साल बाद कॉलेज के मेरे को 21 महीने करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो इट डिपेंड्स कि इफ यू वांट टू गो टू लिटिगेशन देन जस्ट forget about CS, especially when you want to go to litigation with respect to non-corporate thing, In traditional like chambers. uh, in traditional litigation. Correct, just correct. So if you want to go that way, then you should not worry much about CS membership number. However, if you want to go into litigation or into corporate line, litigation related to company matters or IBC, SARFACI, whatever it is, company matters, and or you want to go to into a company as a secretarial or compliance management manager, then I would suggest you should just invest 21 months. It will give you results, although the results will be shown at a later stage, because not everyone gets paid at a higher amount initially. As we have discussed, experience Right. and location, everything matters. So yeah, if you have that perspective, I would suggest just get the membership certificate, membership number, and life will be different for you. Sir, because I have no idea about it, so I'm asking, do you get paid during those 21 months? Yes, yes. So Okay. very minuscule amount, very trivial amount. In Indore, I think people are getting paid 1,500 or something or so, like that minimum. But yeah, you will. Because that is a huge problem with people spending 5 years and then 21 months. That could be a problem for many people. But yeah, if you No, invest those 20, so for that as well, I'm yes, sorry. But for that as well, if you see in litigation, you don't have that much scope in few initial years. right. Okay. मतलब ऐसा होता है कि अभी भी लोगों को 10,000 अर्न करना इंदौर जैसी सिटी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके Right. शुरू के 2 साल 3 साल. No, but राइट. those who want to pursue their career in law firms, like who want to uh, work with law Yeah, firms. then if you get a job opportunity, I would suggest just go ahead with that and try to negotiate with the firm that मुझे CS की membership भी लेनी है तो मुझे थोड़ा टाइम उसके लिए चाहिए होगा बाद में. So Mm. can you just adjust that? So ऐसे करके आगे if you get some time and you can do your training, no, so that would be an add-on. So Right. I would suggest कि आप ऐसे drop मत करो because you always have time to do that traineeship. It's not like कि आपने clear करा exams and you have to go to training. Okay. Okay. ऐसा. So आप I would suggest if you are going to a law firm, you are getting an opportunity, just grab that opportunity because opportunities are very rare nowadays. Market is Right. not very good today. And अभी वो ले लो. बाद में you can plan to get the membership because many people at their 40s, 30s are going ahead with the membership numbers to obtain their membership. So it's fine. It's fine either way. Okay. Thank you so much, sir. It was great talking to you, and I'm sure a lot of people will get benefit from this conversation. So thank you so much for answering all the questions and sharing your insights. Thank you so much, Rashmi. It was amazing to talk to you. I mean, it was a nice experience for me, and I hope this will reach to as many people who have the queries and their queries get resolved. If not, yeah, just drop me messages. I will try to respond to as many as I can. Right. Thank you so much, sir. Thank you so very much.